We're getting some breaking inputs at this point in time. The homicide angle is back into focus now. Another friend of Sushant Singh Rajput speaks out and says that he, in fact, from day one is claiming that SSR was murdered. He says that his friend Sushant Singh Rajput was strangulated. पहले दिन से मैं बोलते आ रहा हूं कि सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं किया है, इसका मर्डर हुआ है, इसका गला घोट के मारा गया, वो भी 13 तारीख के रात को, 14 को नहीं 13 तारीख को। ये मैं आपके माध्यम से भी बताते आ रहा हूं। उसके लिए कुछ डिटेल है जिसको आपको माध्यम में आपको दिखाना होगा। आप उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जाइए। मैं मुंबई का जन्मा हूँ, मुंबई कूपर हॉस्पिटल मेरे बाजू में है, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हेरा फेरी होती है। कूपर हॉस्पिटल ने मेडिकल जो लोग ने जाँच किया, 5 डॉक्टरों ने, किसी ने भी टाइम ऑफ डेथ नहीं डाला। क्यों नहीं डाला उसका कारण है। एक ने बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, भूल गए, चौथा बोल सकता है भूल गया। 5 के 5 कैसे भूल सकते हैं। इनको मालूम था कि कोई हम टाइम डालेंगे शायद कुछ चीज़ खुलासा हो जाए, तो उन्होंने वो नहीं डाला। दूसरा बताता हूँ, पोस्टमार्टम में और एक चीज़ है, खुलासा करता हूँ कि जो विसरा 80% जो ये लोग ने खपा दिया है, 20% सिर्फ गया है एम्स के पास। तो 20% में उस विसरा में शरीर में पॉइजन मिला है कि ड्रग्स मिला है कि केमिकल मिला है कि कुछ दवाई मिली है, वो आप बता सकते हो। उससे आप ये नहीं बता पाओगे कि गर्दन दब गया। गर्दन कैसे दबेगा, उसके लिए क्या होता है बताता हूँ आपको। अगर स्पैज़म हो जाएगा तो आपको एक्सरे डॉक्टर निकालने बोलता है। तो कोई भी डेथ अगर होती है हैंगिंग से, उसका एक्सरे रिपोर्ट बनता है, वो मेंटेन होता है। कारण उसमें ये दिखाया जाता है कि लटकने के बाद स्पैज़म बैक पे आया, नेक का कौन सा नस खींचा गया, शरीर का कौन सा हिस्सा खींचा गया। तो जो डॉक्टर थे कूपर हॉस्पिटल का, वो लोग ने ये मेंटेन नहीं किया। उन्होंने एक्सरे नहीं निकाला जानबूझ के, या निकाला होगा तो उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि उसको हकीकत में टांगा नहीं। क्योंकि टांगेंगे तो आपका नस खींच जाएगा, आपके बोन टूट जाएंगे या आपके स्पैज़म मसल पुल हो जाएंगे। तो उन्होंने उसमें ये नहीं रखा, जो पोस्टमार्टम में एक्सरे नहीं रखा। और एक इम्पॉर्टेंट खुलासा बताता हूँ, जो लिक्विड ब्लड डेंसिटी जो आई है नीचे टंगने के बाद, जब आदमी की मौत, जब जान निकल जाती है, तो शरीर में जो आपके खून है वो पानी के आधार से वो नीचे की तरफ जाते हैं, यानी तलवे की तरफ जाएगी। वहाँ नहीं गई है। रिपोर्ट में ये बताया पोस्टमार्टम में कि उसके शरीर बैक पे खून जमा हुआ है। तो ये कब होगा, जब उसकी शरीर ज़मीन पे सोई होगी। तो एक्चुअल में मेरे दोस्त सुशांत सिंह राजपूत का गला घोट के मारा गया है, और ये मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, और यही सिद्ध होगा। और एम्स के डॉक्टर कुछ भी बोल दे, मैं कल वो घूम भी सकते हैं या बोल सकते हैं, बिना शरीर देखे आप सिर्फ विसरा पे बता दोगे कि भाई किसी ने गला घोट दिया, आप उसमें ये बोल सकते हो कि पॉइजन दे दिया, पॉइजन के द्वारा मारा गया। All right, let's now go across to our reporters Imran, Tamal and Mohit are joining us on the broadcast. Let's first go across to Imran. On one hand, of course, the NCB's investigation is proceeding in the Bollywood drug angle nexus direction, and on the other hand, there are claims being made by relatives, family, friends of Sushant Singh Rajput that the actor was indeed murdered. This after Vikas Singh made those sensational revelations. Supporters of Sushant Singh Rajput feel that by now the CBI should have filed the FIR and declared that it's a homicide case, and they're waiting for the FSL report, and they feel that the AIIMS is dilly-dallying in giving that report. In fact, the lawyer has accused that in what the photographs he had sent the AIIMS, the doctor had himself confirmed that 200% it is homicide. Why is the CBI dilly-dallying while raising hopes? Everybody were hopeful that CBI entering into it, that the Mumbai police investigation was flawed. According to the followers of Sushant Singh Rajput, the supporters, the lovers of Sushant Singh Rajput, and including his own lawyer, had said that declared that there was many goof-ups on the part of Mumbai police, and in fact there was an attempt to hide the entire truth of the Sushant Singh death mystery. Now they're questioning the CBI and the AIIMS said, why is it not that the report is coming up? Why is there delaying in the CFSL report? There is a war of words happened now. The doctors at the AIIMS are saying that they have to go through, they have to give a conclusive report, and they cannot just give any report based on pressure. But this is what it is happening right now, as we are getting to know that even Sushant Singh Rajput's lawyer Vikas Singh is going to hold a press conference today at 7 p.m. Probably also he'll probably make such more allegations that there is there is a lot of delay on the part of the CBI in giving that filing that FIR and declaring that Sushant Singh Rajput's death is not a suicide but it was an attempt murder and it's a homicide case. Well, that's what the family lawyer is claiming at this point in time. Imran, stay on with us before I go across to Tamal and Mohit Bhatt. We have some reactions lined up of Sushant Singh Rajput's friends.
पेनफुल, बहुत तकलीफ हो रही है ये सोच के कि एक इंसान को कुछ लोगों ने मार डाला, एक जवान लड़के को, एक 34 ईयर ओल्ड यंग टैलेंटेड, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी हमारी इंडस्ट्री का टैलेंटेड, ओ ही वॉज अ सुपरस्टार, नहीं, अदरवाइज भी ही वॉज टैलेंटेड, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान था, उसे बहुत सारे सपने थे और बहुत सारी चीज़ें करने की काबिलियत थी उसमें, बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन, उसकी पढ़ाई की वजह से, उसकी चीज़ों की वजह से उसमें काबिलियत थी। तो एक ऐसे इंसान को किसी चक्रव्यूह में फंसा कर कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा के ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत ही सोच के भी पेनफुल होता है कि पता नहीं क्या क्या किया होगा उन लोगों ने उसके साथ, जो कि उसका अंत आ गया, इस तरह से उसके साथ ये कर दिया। और जहाँ तक सुसाइड की बात है, सुसाइड कह के सिर्फ उन 3 लड़कों ने जो उसके घर में थे उन्होंने कहा और किसी ने नहीं कहा। Well, clearly, as it's been coming for a long time, that before he died, he had changed around about 35 to 40 SIM cards. Somebody who would be committing suicide, why would he change so many SIM cards? And why was he calling Uday Singh Gauri 7 times before he died? So these questions are always coming in everyone's mind. People are asking for answers. And what about that body that was recovered from his flat and taken away? So I don't think this really is a suicide. Even if they claim it to be, then there is a bigger hand in that. I'm really glad to know this, that, all this hard work has finally, given some results. Okay. We almost lost hope because there were several reports that there is no homicide and it's a suicide. And it was very confusing. But finally after this message, after this news, finally there is something which is conclusive, and I hope we all get the conclusion. 9 तक मैंने बात की थी उससे, and सब कुछ ठीक लग रहा था, सब सही था. We were planning to meet soon, but फिर अचानक 14th को ऐसा जब न्यूज आया, तो सुसाइड एंगल was out of a question. क्योंकि जिसकी बात 2-3 दिन पहले हुई हो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. इनफैक्ट 13 को उसने दीपेश को भी बोला था कि कुशल से बात कर ले उसके बारे में. तो अचानक 14 को सुबह ऐसा कुछ आना, तो ऑब्वियसली आई वॉज होपिंग दैट इट्स नॉट, आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर दैट इट्स नॉट अ सुसाइड. और अभी जो रिपोर्ट आया है जिसमें बोल रहे हैं कि होमोसाइड एंगल हो सकता है जी, आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग न्यूज इन ये जितने भी दिन है, इसमें सबसे बड़ा न्यूज है ये. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन ट्रैक राइट नाउ. कुशल, आपको भी एजेंसीज ने बुलाया था, आपके भी बयान दर्ज किए, आपने भी तमाम बातें हमें बताया एजेंसी ने कि आपने भी तमाम बातें बताई, अपनी तरफ से पूरी मदद की है आपने एजेंसीज की कि सच सामने आ सके. आपने उनको बताया कि आप आखिरी दिनों तक सुशांत के संपर्क में थे और आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो डिप्रेशन में थे या ऐसी या वो किसी चीज को लेकर अपसेट थे. डेफिनेटली भाई, मैंने ऑलमोस्ट सीबीआई से 3 दिन बात की है. उन्होंने मुझे काफी सवाल पूछे जी, और काफी इन्वेस्टिगेट किया, हर एक चीज, उसकी साइकोलॉजी जी, उसके कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग जो भी मतलब मेरे पास था. मैंने अपने रिलायबल सोर्सेज से भी सुना था जी, मैंने सब कुछ बताया उन लोग को जी. एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट दे वर इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस इन सच अ प्रोफेशनल वे. जी, मेरा सीबीआई पे पूरा फेथ है. और अभी मुझे लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट हम लोग कंक्लूजन पे आ गए हैं और कुछ ही दिनों में हम लोग को पता चल जाएगा एग्जैक्ट रीजंस. एंड फिर दीपेश का मुझे 14th को मैसेज आया था सुबह करीबन 11 बजे जी, saying that Sushant is asking about the deal.
Let's go across to Mohit now. Mohit, of course, you're also tracking the developments as far as the NCB probe and the interrogation of individuals at the office is concerned. There are some filmmakers there being interrogated as well. The family feels somehow that not enough, is being done by the CBI as far as the probe in whether this is a case of suicide or homicide is concerned. All the family is claiming that this indeed is a case of homicide and the investigation needs to move in that direction. Well, Swati, the family of Sushant Singh Rajput from the day one has been saying that they do not believe that Sushant Singh Rajput can commit suicide. It's a clear case of murder and investigation should take place in that regard. And they also level serious allegations on Mumbai police and the autopsy which was done by the Cooper Hospital doctors. And today also we saw Vikas Singh, the lawyer for the family of Sushant Singh Rajput, came out and said it's quite frustrating that the CBI and the AIMS team is taking so long to convert it into a murder case, and the report has not come yet. We know for a fact that how the clarification has come from the director of forensic science, Sudhir Gupta, which has said that you cannot just go see the place of occurrence and see those marks on the neck and decide that whether it is homicide, which is a suicide or a murder. So then the facts has to be ascertained. We know for a fact that how CBI team went back to Delhi. There was a meeting that was scheduled, but that got delayed between the AIMS team and the CBI team. But the family since starting has been saying that Sushant Singh Rajput was fed these drugs, and that is why he passed away without his knowledge. And we know for a fact that how many of the actors have been called in that particular regard. Now, Rakul Preet Singh was also called in today at the NCB guest house over there at Kolaba, and she was completely asked these questions that how did she know Riya Chakrabarti, and her name, we know for a fact, came up during the interrogation of Riya Chakrabarti. She was also asked questions regarding Sushant, that how was the lifestyle of Sushant, when did she come in contact with Sushant Singh Rajput, and does she know that Sushant Singh Rajput was in procurement or the consumption of all these banned narcotic substances. Stay on with us, yes. Mohit, stay on with us. In fact, we also spoke to Sushant's former aides who slammed the suicide theory and claimed that financial transactions also need to be probed, which in fact the ED is already doing. बात तो हम पहले से ही कह रहे हैं, जो निशान है, जो वो देखते, अगर वो फांसी लगता तो ये जो उनको सर्कल बनी है वो यूं करके ऊपर से होता था, लेकिन उनका कोई निशान ऐसे नहीं था. उनका जो भी निशान है सीधा एकदम ऐसे, जैसे उनका जो प्रिय डॉग है फौज, उनके गले में एक पट्टा है जो सेम उस पट्टे की तरह ही है. ये गले में सीधा सीधा ऐसे ही उसके तरह है, उसका बक्कल भी ऐसे लगा हुआ है. तो वो समझ में कि वो मर्डर ही है, वो सुसाइड नहीं लग रहा. अगर सुसाइड होता, वो लटके हुए होते तो यूं करके नहीं होता, वो थोड़ा सा वो ऊपर साइड चले जाता था. लेकिन वो एकदम गोल सा है, राउंड है, पूरा राउंड गोल है. इधर आड़ा चला नहीं हो रहा, पट्टे का निशाना दिख रहा है. जो पट्टे का एक बक्कल है, वो बक्कल का निशान भी दिख रही है गले में. जो फोटो मैंने भी देखी है, वो फोटो देख के बहुत जूम करके देखा, बहुत टाइम देखा, बहुत सोचा उसके बारे में, पर वो दिख रहे कि एकदम उसके. देखिए मैडम, ज्यादातर मंगाने की बात है, मैं तो ज्यादातर उनको कुछ ड्रिंक्स वगैरह ये देखा उनके हाथ में. और ये जो ड्रग्स का जो मामला है 2018 में नहीं था, ये 2019 के बाद में आया है. मैंने पहले भी बताया कि ये 2019 के बाद में जो रोल पेपर, स्मोकिंग पेपर, ये मेरे मार्केटिंग के लिस्ट में आना चालू हुआ. ये पहले नहीं आता था. ये कब की बात है? ये 2019 अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ मैं. ये उसके बाद से ज्यादातर मुझे मार्केट के लिस्ट में रोल पेपर, स्मोकिंग पेपर का ऑर्डर ज्यादा आने लगा. ये 2018 से नहीं था ये पहले. तो अभी किसी से क्या मंगाया वो रिया ही जानती होंगी, क्या उन्होंने किससे मंगाया और किस स्टाफ को बोला है. अगर स्टाफ को बोला भी है तो वो सामने तो आया नहीं किधर से कोई स्टाफ को बोला है मार्केट से ये सब लाने के लिए. कुछ जो मोबाइल चैट जो निकले, इनके ही ग्रुप चैट निकले, जिसमें उसमें सैमुअल मिरांडा है और बाकी शोभिक है और ये रिया है, इनके ग्रुप चैट मिले मैडम. सुशांत सर का तो कोई ऐसा कुछ मिला नहीं कि उन्होंने कुछ किसी स्टाफ से लाने के लिए बोला है कुछ. Let's go across to Tamal now. Tamal, it's all interconnected. The homicide angle and the ED stumbling upon the drug chats and the NCB then, investigating the entire matter. Rais, the former farmhouse manager, also speaks about these parties. He says that it was only after 2019 that he started getting a list of items in which rolling paper was also mentioned. So he's confirming that during those parties, maybe drugs was consumed, but never by Sushant Singh Rajput, as per him.
Well, Swati, a couple of words that the family had been using and have maintained from day one, even had also referred to in their complaint. Number one, criminal conspiracy. Number two, abetment to offence. Number three, manipulation. Number four, murder. Now they are saying that Sushant Singh Rajput has been possibly drugged without his knowledge, which is equivalent to manipulation. They are saying that because of money, there could have been a conspiracy hatched for which Riya Chakraborty was also party to, and thus there was an attempt to push him to a point where he would be mentally not in a position, completely impaired, to think, and thus would commit something unsavory. Number three, they are also alleging murder. Why are they saying murder? They are saying if somebody has been poisoned, if Sushant Singh Rajput has been poisoned, then that becomes murder. So at this point in time, the family's allegation had been at the center of a massive investigation which is on since August 21st. August 21st is the day when CBI started their probe with regards to the mysterious death of Sushant Singh Rajput, and thereafter, till today, they have questioned no less than 30 to 31 people. Now, they have tried understanding from all these people, their testimonies, as where are the discrepancies. Number one, there were 4 people in the house: Dipesh, Neeraj, Keshav, Siddharth Pithani, and then police come in on June 14 when mysteriously the body was recovered from Sushant Singh Rajput's flat. But then, before even the body could be taken out, pictures were out in circulation. Who leaked those pictures? A question that everyone is trying to ask before the Mumbai police, and a question that would also come before CBI, as who leaked those pictures? Did a Mumbai police officer thought it would be very smart to get this picture leaked to a journalist so that they can prove a point and substantiate the narration that it was a suicide? Right. Or was it a part equally of that same conspiracy hatched by Dipesh, Neeraj or Siddharth Pithani, that they leaked the picture? No one else had the access. Wants the agency to reach a solid conclusion soon. In fact, Sushant's sister also tweeted today saying that they have been waiting for far too long now for the truth to emerge. Politicians also, in fact, from across party lines are coming out in support of Sushant Singh Rajput's family, and they are also appealing to the family to have faith in the CBI. Let's listen to this reaction coming in. If you talk about the Sushant Singh Rajput's case, it has opened a can of worms, so to say, in Bollywood. Now, big names are being brought in for questioning for their usage or consumption or procurement of drugs. Big names like Deepika Padukone, she's been summoned tomorrow. I mean, how do you see this entire thing panning out from here on? Do you think the NCB is doing a just action against them? Absolutely. The NCB is doing its job. There is a law. There is a law against drugs, and that law is a necessary law, and they are implementing that law. And that needs to be done. Drugs are a menace to society. They are a menace to young people. They spoil lives, they spoil families, and it has to be rooted out. All right, now with that, we are slipping into a very short break for now. Our reporters will continue to be with us. We'll keep on getting you latest on the other side as well.